Now you will see there are 6 pillars in this. This is first, this is second, this is third, this is fourth, fifth and sixth, and this is seventh, right? And top of it, there's a dome. Now 7 pillar model is basically made you to understand that आपके बिजनेस में कहाँ एग्जैक्ट प्रॉब्लम आ रही है और उसको ट्रबल शूट कैसे करना है, उसका पर्पस क्या है ट्रबल शूट करने का. द मोमेंट यू नो दीज 3 थिंग्स यू कैन इजीली सॉल्व एनी प्रॉब्लम, राइट? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है और उस प्रॉब्लम के कारण क्या इंपैक्ट आ रहा है. इफ यू नो दीज 3 थिंग्स आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लीड्स नहीं आ रही है, ठीक है, लीड्स नहीं आ रही तो उसके पीछे का सोर्स क्या है, मार्केटिंग नहीं हो रही. मार्केटिंग नहीं हुई तो क्या होगा, लीड्स नहीं आएगी प्रॉपर, जिससे सेल्स नहीं हो पाएगी. ग्रेट, व्हाट कैन वी डू फॉर मार्केटिंग? नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स. इंस्टेड ऑफ सेइंग ब्रांडिंग कहाँ पहुंची, एडवर्टाइजिंग कहाँ पहुंची, मार्केटिंग कितनी है, आपकी बजट एलोकेशन क्या है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस थिंग्स वी कैन कम टू अ सिंपल नैरो डाउन पॉइंट. तो पहला पिलर जो अपने बिजनेस में होता है, हर किसी के बिजनेस में होता है, इज नोन एज मार्केटिंग. सो द फर्स्ट पिलर इन बिजनेस इज नोन एज मार्केटिंग. दैट मीन्स हर बिजनेस का पहला पिलर जो होता है वो मार्केटिंग है. दैट इज टू जनरेट लीड्स. और मार्केटिंग का काम क्या होता है, टू जनरेट लीड्स. दैट मीन्स टू बेसिकली गेट पीपल इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट. ऐसे लोग जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उनकी कोई भी डिटेल आपके पास होना, उसको लीड्स बोलते हैं, राइट? तो पहला पिलर आपके बिजनेस के अंदर है मार्केटिंग और उसका काम है लीड्स लाना. द सेकंड पिलर एवरी बिजनेस नीड्स इज नोन एज सेल्स, जिसका काम है कस्टमर लाना, राइट? बिकॉज नाउ आपके पास लीड्स हैं तो अगला पिलर कौन सा होना चाहिए, अगला पिलर कौन सा होना चाहिए, सेल्स, बिकॉज इट गिव्स यू कस्टमर. द थर्ड पिलर यू नीड इन योर बिजनेस इज नोन एज ऑपरेशंस. दैट मीन्स प्रोडक्ट डिलीवरी, क्योंकि अब आपने कस्टमर को बेच दिया तो आप कुछ डिलीवर करने वाले हैं, राइट? जैसे राइट नाउ आई एम डिलीवरिंग, दिस इज डिलीवरी फॉर मी, सर्विस, राइट? देन कम्स फोर्थ थिंग विच कम्स टू एज फाइनेंसेस, क्योंकि अब आपने डिलीवरी भी कर दी. नाउ यू नीड टू नो अंडरस्टैंड कि हाँ यार बॉस, अब फाइनेंस पे ध्यान देना पड़ेगा सो दैट वी कैन मैनेज मनी. सो दिस इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग मनी, क्योंकि अब कस्टमर ने आपको पैसा दिया तो पैसा कहाँ कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए और कैसा होना चाहिए. जैसे आपके पास पैसा आना चलता है, द फर्स्ट थिंग यू स्टार्ट डूइंग इज नोन एज स्केलिंग. और स्केलिंग के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको दिमाग में चाहिए दैट इज नोन एज HR. HR को आप स्टाफ एंड सिस्टम्स भी बोल सकते हैं, राइट? इसका काम है बेसिकली टू बिल्ड अ टीम, राइट? ये यहाँ पे आप बिल्ड लिख सकते हो या आप स्केल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास टीम है और सिस्टम्स है तो स्केल करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, करेक्ट? तो फिफ्थ पिलर हो गया हमारा HR, इसको स्टाफ एंड सिस्टम्स भी बोलते हैं. एंड इट इज यूज्ड टू बिल्ड अपन वट एवर यू हैव बिल्ड एज अ फाउंडेशन. एंड देन कम्स द सिक्स्थ पिलर विच इज नोन एज R&D. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू विल गेस द लास्ट पिलर? नाउ व्हाई R&D इज यूज्ड? टू बेसिकली ऑलवेज बी इनोवेटिव और बेसिकली इम्प्रूव, यानी कि टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट, टू इम्प्रूव योर सेल्स, टू इम्प्रूव योर मार्केटिंग, टू इम्प्रूव एनीथिंग व्हाट यू आर डूइंग इन योर बिजनेस इज नोन एज R&D, राइट? HR, R&D. Who will tell me which is this last pillar? और ये लास्ट पिलर लेटा हुआ होता है, like it's not standing pillar, it's a horizontal pillar. Who will tell me what is the last pillar? Automation? Nope. So automation will come in this part. HR का साइड चले जाएगा वो, क्यों? क्योंकि वो स्टाफ और सिस्टम्स दोनों हैंडल करी. सिस्टम्स इज नथिंग बट ऑटोमेशन, राइट? सिस्टम्स अगर बहुत सारे हो गए तो ऑटोमेशन आ जाता है. नो, देर आर नॉट 6 पिलर्स, देर आर 7 पिलर्स. इफ यू सी 1 2 3 4 5 6, और ये जो लेटा हुआ पिलर है, this is the 7th pillar. I want you to guess what is the 7th pillar. Ecosystem? No, ecosystem is not a pillar. Ecosystem is a business model that you can opt in for. Excitement. Management, very correct. Evertrust consultants said it very correct. It is known as management, the last pillar. और उसका काम क्या होता है? इन सब को मैनेज करना, कॉमन सेंस, राइट? अब एक बात बताओ मुझे, एज अ सोलोप्रेन्योर what you would be focusing on in your business? इन 7 पिलर में से आप किस पे फोकस करोगे एज अ सोलोप्रेन्योर? ओके, राम सेज मैनेजमेंट, एवरीबडी सेज मैनेजमेंट. आर यू श्योर? बिकॉज ऑफ सोलोप्रेन्योर बॉस, नो वन इज ओवर देयर. प्रोडक्ट डिलीवरी, ओके. सेल्स, ओके. R&D, ओके. सब करना है खुद ही, ओके. सो कार्तिक said it right, it's marketing. Here is the simplicity of this model. You need to manage all, but you need to start with marketing. The first thing you need to focus on is marketing. The reason is simple. अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो लीड्स नहीं आएंगी, जो मैंने इसके नीचे लिखा है. अगर लीड्स नहीं हो तो सेल किसको करोगे, और मैनेज किसको करोगे, डिलीवरी किसको करोगे, और बिल्ड किस पे करोगे, और इम्प्रूव क्या करोगे इफ़ यू डोंट हैव इवन लीड्स. सो हुएवर राइट नाउ इज लाइक कि बॉस मेरे पास तो लीड्स ही नहीं है, फोकस ऑन द मार्केटिंग पिलर. वीक 3 एंड वीक 6 की मॉड्यूल 3 आई थिंक
They both are for marketing and how to get leads. Focus on that. So there would be people ki yaar mere paas thodi leads hai but I'm not getting sales. Then focus on sales. Right? If you don't have customers but you have some leads, focus on sales. Your sales is not better. You need to create a better sales process. You need to focus on sales. Script बार बार repeat करनी पड़ेगी. Cold calling script को refine करना पड़ेगा. All these things. Then comes third part. Let's say you have some customers and you have some leads, but now you're not getting referrals or testimonials, so that you can basically expand. What is the meaning of that? आपकी delivery खराब है. Right? The product is not that good that you want it to be. So focus on operations. How you can make your product better. Then comes finance. Right? कि ठीक है अब ये तीनों चीज़ें हो गई. Now comes finance. कि boss how to basically structure my finance thing so that I'm paying the right taxes and giving salaries out and all these things. Right? That's where finance comes. Now let's say you are having enough money and you see in your finance sheet that there's a little about section of savings, and there's a lot of savings. Now you can go for the HR pillar, which is staff and systems. So there's a question, what about when it's not your product and just an affiliate? Yeah, so no problem. The thing would be same. Like it's your product or it's someone else's product. There's no difference in that. It's just that you cannot do changes in the product. You can add bonuses, but you cannot do any changes in the product. तो बिजनेस तो सेम ही है ना. यू नीड टू डू मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, फाइनेंस, HR, R&D, मैनेजमेंट. यू नीड टू डू दैट. राइट? प्रोडक्ट आपका है, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. राइट? नाउ कम्स टू R&D पार्ट. राइट? तो अब आपने टीम भी बिल्ड करना चाहोगे. नाउ इट्स लाइक हाउ टू इंप्रूव एवरीथिंग. क्योंकि मेरे पास टीम भी है, मेरे पास सब कुछ भी है. आई कैन नॉट हैव द सेम एक्सपेंसेज एंड हैव द सेम इनकम बिकॉज मेरा प्रॉफिट कभी नहीं बचेगा. नाउ यू वर्क ऑन इंप्रूवमेंट कि हाँ यार मार्केटिंग में ये क्रिएटिव यूज़ करके देखते हैं, ये कॉपी यूज़ करके देखते हैं. सेल्स में लेट्स ट्राई दिस पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट. ऑपरेशंस में लेट्स ट्राई 1-to-1 कॉल्स. लेट्स ट्राई ग्रुप कोचिंग. लेट्स ट्राई दिस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट. लेट्स ट्राई दिस फाइनेंस में लेट्स क्रिएट अ बेटर टेम्पलेट. लेट्स स्टार्ट यूजिंग अ सॉफ्टवेयर. सो यू बेसिकली स्टार्ट इंप्रूविंग. इट इज नोन एज R&D. एंड द लास्ट पार्ट इज मैनेजमेंट. बिकॉज अब आपके पास टीम भी हुई है, वो टीम भी R&D कर रही है. नाउ एवरीथिंग इज सेटल्ड. Now what you do is only do management. Got it? How many of you think that's a powerful idea and that's a powerful concept that is just in front of your screen? Okay, Devendra thinks it's powerful. Shubha thinks it's powerful. Muskan finds it's amazing. Neeru finds it's Evertrust Consultants. Ramji. Okay, great. So this is how basically the whole system looks like. Now you would be seeing there's a dome above this. What is this? What is this dome? Like ये क्यों बना ऊपर? इसका क्या यूज़ है? No, not product, not brand, not business. Okay. So this is basically तो ऐसा इमेजिन करो, एक छोटा पिलर है, मतलब बड़ा पिलर है, बहुत बड़ा पिलर, जिसके ऊपर एक छोटे छोटे पिलर खड़े हुए हैं और उसके ऊपर एक डोम रखा हुआ है. तो मैनेजमेंट इसको संभाल रहा है. तो ये सब किसको संभाल रहा है? प्रॉफिट को संभाल रहा है? नो, they are handling your idea or whatever solution you are giving. They are supporting your business idea, whatever idea you had. Right now in our community, it's coaching, consulting, whatever. So that about dome is basically your idea. उस idea को establish करने के लिए, and to get it in the market and make profit out of it, you need to do marketing, sales, operation, finance, HR and R&D. And to do all these things, you need to do management. So here what it comes down. अगर ये इस टाइप की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब मत करो. Click on my channel, see all the videos. If you feel like there are videos which can actually help you, then so click the subscribe button and hit the bell icon for the notifications. Thank you.